जी जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर सीईओ हैं एनएसटीसी से, स्किल इंडिया मिशन के भी। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने इतना सारा समय भी दिया है स्किल इंडिया मिशन के लिए, मजबूत उसको किया है। आज के समय की अगर बात की जाए तो उसमें अब और ज़्यादा जो बदलाव की तैयारी की जा रही है, उसके विस्तार को हम देख रहे हैं। किस तरह की उम्मीद करके चल सकते हैं इस अंतरिम बजट में? जी, मुझे मुझे लगता है कि जो स्किल इंडिया मिशन था, ये अपने आप में एक बहुत सही कदम था। सरकार ने जो लिया था, जब 2014 में पहली बार सरकार बनी थी, उसके बाद ही इसको मिशन का रूप दिया गया और एक नई मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोली गई थी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम मैक्रो पिक्चर देखें, तो हमारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का जो मिला के जो जी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, वो यूनियन फेडरल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की मिला के एक रफली 3% 3% जीडीपी का होता है। हम्म। तो ये इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसमें जो रकम लाने की जरूरत है वो बहुत बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, ये इंडिया को इवेट करेगा, ये हमें बड़ी आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो हमें लगता है ये बहुत अपने आप में जरूरी है कि हम स्किल इंडिया मिशन को फिर से री एनर्जाइज करें, रीएक्टिवेट करें, और एजुकेशन और स्किल्स पे जो स्पेंड करा जाता है वो ज्यादा लें। क्योंकि देखिए, इस समय हमारे पास पूरे दुनिया में सबसे यंगेस्ट वर्कफोर्स है हमारे पास। 27 28 28 साल एक एवरेज एज है जो इंडियन वर्कफोर्स की है। ये जी। पूरी दुनिया की यंगेस्ट वर्क मैन पावर है, वर्कफोर्स है, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जो कुछ इंडस्ट्रीज ने किया है, आईटी और आईटी एनेबल्ड सेक्टर ने किया है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम दुनिया को एक अपनी वर्कफोर्स हर जगह उसको लेवरेज करके और एक अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है या $7 ट्रिलियन का लक्ष्य है, हम्म। उसके और करीब जा सकते हैं। तो जी। मुझे लगता है कि और हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी इससे काफी बढ़ेगा। इसमें जो रैंकिंग है इंडिया की वो आगे बढ़ेगी। तो अब आप देखिए, अगर भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है भारत के जीडीपी ग्रोथ का, तो उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में जो हम बजट जो लगा रहे हैं वो हम्म। भी काफी हो। और इसमें इंडस्ट्री को ज्यादा ओनरशिप लेने की जरूरत है। ये सिर्फ सरकारी मिशन की तरह से नहीं चल सकता, ये जी। ज्यादा इंडस्ट्री को कंधे से कंधा मिलाकर इसको चलाना है। क्योंकि इंडस्ट्री को समझ है कि किस तरह के स्किल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। इंडस्ट्री 4.0 की जो 4.0 की जो फोर्सेस हैं, उसमें टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें जी। किस तरह से स्किल करना है। यानी अलग तो अलग मुझे मंत्रालयों लगता का है समावेश जो है वो हमें और बेहतर तरीके से अब आने वाले समय में असीम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। ऐसे में जयंत जी ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि इसमें और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बजटरी एलोकेशन और भी ज़रूरत है। मेरा सवाल ये कि न सिर्फ भारत में एक स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, जो कि एक इकोनॉमी हमारी एक्सपैंड कर रही है, यहाँ भी ज़रूरत है, बल्कि हमने देखा है कि बाकी के जो देश हैं वहाँ से भी, चूँकि वहाँ पे ह्यूमन वर्कफोर्स की कमी महसूस की जा रही है, तो वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारे यहाँ से, आप अपने यहाँ से जो स्किल्ड वर्कफोर्स है आप हमारे यहाँ भेजें, हम उनको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे पैसे देंगे, आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो न सिर्फ भारत में डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा भारत में इसमें सारे बड़े मुल्कों को देखते हुए सबसे यंग वर्कफोर्स है, हमारी जो एज है उसकी 27 28 साल। और वहीं दुनिया के ज्यादातर राष्ट्र हैं, वो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, या अब चाइना भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, या यूरोप के मेजर जो नेशंस हैं, वो एजिंग इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल। उसमें एवरेज एज जो वर्कर्स की है, वो मिड 30s से लेके कुछ कुछ कंट्रीज में तो अर्ली 50s तक है। तो ये सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को सर्विस नहीं कर पाएंगे अपनी पॉपुलेशन की एजिंग को देते हुए। तो ये तो भारत के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे दुनिया में हम अपना लोहा मान के और अपने अपने लोगों को, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, आप थोड़े इंडस्ट्री को जाने दीजिए, लेकिन जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको कितना ज्यादा वो मिलेगा कि मिडिल ईस्ट में आप देख लीजिए, जिस भी कंट्री में आप जाइए वहां पे हर जगह हर तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति भारत का मिलता है। आप लंदन में चले जाइए, हर पांचवा या छठा जो आपको व्यक्ति मिलेगा लंदन की सड़कों पे, वो इंडियन होगा या एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का होगा। तो जी। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरा दुनिया दुनिया का हम टैलेंट
जो है वो इंडिया से वो लोग एक्सपेक्ट कर जी। रहे हैं। और इंडिया में लैंग्वेज की प्रॉब्लम कम है, इंग्लिश लोग जानते हैं, टाइम जोन जो डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से हम अच्छे प्लेस्ड हैं। तो चाहे वहां जाकर या ऑनलाइन भारत से जुड़कर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कई कई क्षेत्रों में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड लेवरेज कर सकते हैं अगर हम अपना थोड़ा और तवज्जो दें, जितना दे रहे हैं उससे और ज्यादा शिक्षा और कौशल जी, विकास के बिल्कुल। एरिया। यानी और बेहतर तरीके से देखिए जो क्रियान्वयन जो है वो होना चाहिए। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राव इंद्रजीत ने अंतरिम बजट से उम्मीद जताई है कि यह देश की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। लगातार इस तरह की जो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं और जो उम्मीदें इससे लगातार चल रही हैं वो भी बेहतर यही कि ये नए भारत का बजट है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके राह पर आगे चलने के लिए किस तरीके के बदलाव होने चाहिए उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और ख़ासतौर से यहाँ अगर जिंदल जी अगर देखा जाए, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल की भी अगर बात की जाए, लेकिन वर्क फोर्स में जब हम नारी शक्ति की बात अगर करें, क्योंकि इस बार हमने देखा कि किस तरीके से जो नारी शक्ति के समावेश की बात की जा रही है, सशक्तिकरण की बात की जा रही है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट कहती है अगर इतना ही वर्कफोर्स, अगर हम लैंगिक समानता की बात की जाए वो किस तरह की है उसकी अगर इस बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ उम्मीद जताई है अंतरिम बजट को लेकर, आइए सुनते हैं। अंतरिम बजट का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिन है। अभी सब आपके सामने आएगा। Budget will be all progressive and for the development of the country. और भारत सरकार के जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि ये देश में विकास की गति को, उसकी स्पीड को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा और सरकार अपनी आर्थिक सुधार की नीतियों को भी लगातार जारी रखेगी। अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में है। 7.3% का जो विकास दर है वो आने की संभावना है। तो मेरे अनुसार सरकार जो है पिछले सालों में जो की है उसी को आगे बढ़ाएगी। और कुछ एक कदम हो सकता है पीएम किसान में जो उसकी लागत है वो 6,000 से करीब 8,000 तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा नारी माने फीमेल्स के लिए कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ जो है वो हो सकता है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जब वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और उनके साथ साथ वित्त राज्य मंत्री भी थे, उस वक्त की ये तस्वीर। मुंह मीठा कराया जा रहा है और मुझे लगता है कि मीठी बजट की उम्मीदें हम सभी करें। जिंदल साहब कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ कि साल दर साल वित्त मंत्री की भी मुस्कान बढ़ती जा रही है जी। और वो आ रही है उस कॉन्फिडेंस से जो देश सब मिलजुल करके इस तरह के हालात पैदा कर रहा है कि हर एक कुछ ज़्यादा लोग इससे खुश हैं। सिर्फ वही लोग थोड़ा सा मुश्किल में हैं जो जिनकी मजबूरी है कि हम उन्हें दुखी रहना है। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि ये जो नारी शक्ति को लेकर के जी, जो गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किए हैं 4 स्तंभ, बिल्कुल सही किए हैं क्योंकि इनमें पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है। ये एक तरह से अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं अपने। यूथ, नारी शक्ति, फार्मर्स और ये पुअर जो लोग हैं इनको, तो इनको सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे ज़्यादा रिजल्ट निकल सकते हैं और देश बहुत मजबूत बनेगा। लेकिन अगर हम इनको इग्नोर करेंगे या कमी छोड़ेंगे तो फिर वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ें वो पूरी नहीं होती। वो इन्हीं स्टेप्स को लेने से हम उसके बिल्कुल पास या वहाँ पर पहुँचेंगे और आगे भी ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनी रहेगी। ऐसा मेरा मानना है कि ये इनको लेकर के और हमें इन्हीं के ऊपर फोकस करके अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहाँ पहुँची थी। साथ में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति और तमाम वहाँ पे लोग मौजूद हैं। माहेश्वरी जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हमने देखा कि ये भी अपने आप एक बहुत ही सुखद आश्चर्य रहा कि जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, हमारा जो एग्री सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। और लगातार बीते वर्षों में सरकार के लगातार इंटरवेंशन की वजह से जो हमारा एग्री सेक्टर है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में उससे जुड़े जो किसान हैं, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत के 4 स्तंभों में से हमारे किसान सबसे ऊपर हैं, ऐसे में इस बजट से भी और बाकी आने वाले दिनों में जब विकसित भारत की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का रोल किस तरह से देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की दिशा में?
देखिए, किसानों का रोल तो हमेशा ही अभूतपूर्व रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 3 प्रॉब्लम से हमेशा से जूझ रही है। वो सब फर्मेंटेशन की बात हो रही है, मार्जिनल होल्डिंग की बात हो रही है, या सब डिवीजन की बात हो रही है। जो एक किसान है उसके पास आज एक क्रिटिकल मास ही नहीं है। अगर वो एक अच्छा इम्प्लीमेंट लगाएगा, अगर ट्रैक्टर रखना चाहता है, कोई रखना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम होल्डिंग चाहिए आज उसके पास। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो एक है, उसके सन्स को, उसके ऑफिसर्स के, उसके बच्चों को कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो जमीन के जो, जिस आदमी के पास 10 एकड़ जमीन थी मे बी 50 साल पहले, आज उसके इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1 एकड़ है, आधे एकड़ पे है, जो कोई ना तो साइंटिफिक ढंग से फार्मिंग कर सकते हैं ना उसको कर सकते। तो हमें ये कंसोलिडेशन, जो कि मुझे लगता है करीब 70 साल पहले इंडिया में एक बार कंसेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन आया था, कि जहां पे अपनी चकबंदी, जिसको हम रोजगार भाषा में बोलते थे, कि हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। बड़े नीतिगत सिद्धांत और पॉलिसी की जरूरत है, कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छा काम किया है, एग्जैक्टली है। तो हमें कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन की बात करनी पड़ेगी। और दूसरी जो हमारी सब्सिडी बेस है, उसको मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम आपके जवाब पे आएंगे, लेकिन हम आपको एक ट्वीट दिखा दें। एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट डॉक्टर भगवत कृष्ण राव कराद एंड श्री पंकज चौधरी एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द Ministry of Finance called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan before presenting the union budget. President Murmu extended her best wishes to the ministry and minister. तो ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये एक ट्वीट किया गया है जी। एक्स पर कहा गया है कि उनको बधाई दी गई है, बेस्ट विशेस दी गई हैं आज के इस अंतरिम बजट को पेश करने को लेकर। बिल्कुल ये संदेश, और इसके साथ साथ वो तस्वीरें जो हमने अभी आपको दिखाई थी, वो तस्वीरें भी साझा की गई हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, और उसके बाद ये जो एक्स पर उन्होंने संदेश साझा किया है, ये देख सकते हैं। अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो उन्होंने दी हैं। और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें, निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके की जो अपडेट्स अभी तक चल रहे हैं, और जब बजट की शुरुआत होगी, अंतरिम बजट की शुरुआत होगी, उससे पहले हम देखते हैं किस तरीके से अलग अलग जो घटनाक्रम चलता रहता है, जो बदलाव चलता है। और यहाँ हम लगातार बात कर रहे थे, महेश्वरी जी आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब अभी तक देखा जाए, खासतौर से ना सिर्फ हम कोविड काल की बात करें, लेकिन उसके बाद अभी भी वैश्विक मंदी जो है वो हमने देखी, और ख़ासतौर से वैश्विक दर को अगर देखा जाए, विकास दर जो है वो 3.1 या 3.2 अभी अनुमानित है। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं विकास दर की, तो उसमें अच्छा खासा इजाफा हमें नज़र आता है, लगभग दोगुनी वो नज़र आती है। इस बारे में आगे भी आपसे मैं यहाँ जानकारी लूँगा। हमारे जो दोनों खास मेहमान हैं उनके साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, साथ में उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इसके साथ, इन तस्वीरों के साथ ही रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूँ। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष पेशकश में। अंतरिम बजट 2024 पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान का पैनल जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर महेश्वरी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वैश्विक मंदी जो है वो हमने देखी है विश्व स्तर पर, लेकिन उसके साथ साथ जो भारत की विकास दर की अगर हम तुलना करते हैं तो वो दोगुनी हमें नज़र आती है। ये जो परिणाम हैं इनके, वो क्या हमारे भारत को, हमारे देश को जल्द ही विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं?
बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जब तक कृषि का हम अवलोकन न कर लें और कृषि का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें पिछले 20 साल में 25 साल में कृषि का जो इकोनॉमी में टोटल कंट्रीब्यूशन था वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली नीचे होता जा रहा है। हाँ, और हमें उसको बढ़ाना है। अभी भी हमारे यहाँ कृषि जो है वो खाली सब्सिस्टेंस या रोजगार का माध्यम है। इसको हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का स्टेटस से कंपेयर करना पड़ेगा कि उसकी क्या कॉस्टिंग है और क्या उसको प्राइस मिल रही है मार्केट में। बिकॉज ये बड़ा पैराडॉक्सल है, अगर हम प्राइस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर्स को बैकलैश हो जाएगा। तो हम इसके जो सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्राइस को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इससे वाला हमें करना पड़ेगा कि उनकी कॉस्टिंग को कम की जाए। कॉस्टिंग को कम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इसको सब्सिडी के मॉडल को प्रोडक्टिव लिंक जो हमने इंडस्ट्री में रखा है उसको क्या हम इंसेंटिव मॉडल में बांट सकते हैं। आज हमें सब्सिडी मिल रही है एक एक्स अमाउंट की, चाहे वो आदमी कम परफॉर्मेंस करे या ज़्यादा परफॉर्मेंस करे। हमें भी देखना पड़ेगा कि पर एकड़ेज कितनी उसकी कल्टीवेशन है, वो क्या बेनिफिट दे रहा है। उससे अगर हम उसको हो सकता है टाइम आ जाएगा जहाँ इसको रिसर्च बेस करके हमें सब्सिडी को कहीं ना कहीं इंसेंटिव बेस पे लाना पड़ेगा, ताकि लोग विद इन लिमिटेड जो उनकी होल्डिंग्स है, लिमिटेड उनकी कल्टीवेशंस है, उससे मैक्सिमम क्रॉप को बेनिफिट दें। लेकिन तो सबसे सर जो सरकार ने इंटरवीन किया कि पीएम किसान सम्मान निधि देने का काम किया, इससे आपको नहीं लगता कि जिन किसानों की तरफ आपका ध्यान है उनको कम से कम ये एक इनपुट के तौर पर, एक इंसेंटिव के तौर पर आपको दिया जा रहा है कि आप ये लीजिए इनपुट कॉस्ट के तौर पर, जो आपके खर्च हो रहे उसमें से कम कुछ तो बचेंगे, 6,000 तो बचेंगे। हाँ, डेफिनेटली। बट क्वेश्चन है जो जब हम फिक्स अमाउंट देते हैं तो देन इट अमाउंट्स टू सब्सिडी। हम ये बात कर रहे हैं कि सब्सिडी तो चाहिए, हमने पहले क्लियर है कि हम सेल प्राइस को नहीं बढ़ा सकते। तो हमें या तो कॉस्ट को कम करना है, या तो हम उसको फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दें, चाहे उसको सीड फ्री दें, चाहे उसको पानी फ्री दें, या कहीं बिजली फ्री दें। एक मॉडल ये है। एक मॉडल ये है कि हम उसकी जो सेल प्राइस है उस पे अगर उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा है अगर उसको, तो उसको हम इंसेंटिव दें ताकि और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए। आवश्यकता ये है कि इसके साथ साथ जो और संबंधित क्षेत्र हैं उसमें हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। फिर चाहे कौशल विकास की बात करें, तमाम जो योजना है उनके जरिए किसानों को लाभ मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, ओडिशा सरकार में मंत्री प्रताप देव ने कहा है कि ओडिशा से बहुत उम्मीदें हैं। प्रताप देव ने कहा कि हमें बंदरगाह क्षेत्र, औद्योगिक गलियारा क्षेत्र और बिजली क्षेत्र में काफ़ी फंडिंग की उम्मीद है। ये उम्मीद जताई उन्होंने। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। The expectation from Odisha is actually very high, but I am skeptical that since it will be a interim budget, how much they will be able to cater to the demands of the state. Like for example, we have been in the last couple of years we have been the largest investment destination in case of industry in the country. So development, we expect a lot of funding from the government in the budget for the port sector, for the industrial corridor sector and as well as the power sector. तो ओडिशा को चूंकि कोस्टल स्टेट्स है इसलिए पोर्ट को लेकर और भी एलोकेशन की, बजटरी एलोकेशन की जरूरत है। लगातार आप सुन रहे थे प्रतिक्रिया। और इस सब के बीच आईएमसी की डीडीजी शीतल करलो ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया जा रहा है। This budget, being an interim budget, I am not expecting too much, but with regards to women empowerment, clearly there's a focus. There's a focus on women empowerment with regards to entrepreneurship from women, with regards to tax rebate, with regards to women welfare, health, also skilling. And what's important is I think the government will also look at working women and maternity leaves and tax rebates. तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरीके की जो उम्मीदें हैं उनका जिक्र ये कर रही थी। लेकिन वहीं आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक अजीत मंगरुलकर ने कहा कि उद्योग जगत को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान तो देंगे वो, और फिस्कल डेफिसिट यानी फिस्कल कंसोलिडेशन उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 5.9 को हमें 4.5 पे लाना है तो कुछ ना कुछ तो अभी से ही तैयारी करना पड़ेगी गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री पे तो सरकार ध्यान देगी, और शायद इस बजट में हमें और कुछ इस क्षेत्र में कुछ अनाउंसमेंट्स दिखाई देंगे। तो लगातार हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन की, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर,
कैबिनेट ने, चूंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट में बजट को पास कराना ज़रूरी होता है, कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट ने इस बजट को, अंतरिम बजट को अपनी मंजूरी दे दी है और अब से कुछ ही देर के बाद इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद पटल पर रखेंगे और वो हमारे सबके सामने होंगी। क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हम लगाए बैठे हैं और पूरा जो भारत है और तमाम सेक्टर्स के जो लोग हैं वो सभी इस अंतरिम बजट से क्या कुछ उम्मीदें बनाए रखे हैं, अब से कुछ ही देर के बाद इस पर से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर के बाद संसद भवन में इस बजट को सबके सामने रखने वाली है। जी बिल्कुल, लेकिन इस इंतजार को अब ज़्यादा लंबा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार अंतरिम बजट 2024 की जो पल पल की अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। आइए जयंत कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख यहाँ कर लेते हैं। जयंत जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कृषि क्षेत्र की कि वहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है और हमने देखा कि सरकार की तरफ से जो कौशल विकास का कार्य किया गया, फिर चाहे किसानों की बात की जाए, महिलाओं के लिए उत्थान की बात की जाए, तो लगातार कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और उनके परिणाम भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोशिश तो सरकार से काफी की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। जिस स्पिरिट और जिस इंथुजियाज्म के साथ में स्किल इंडिया मिशन शुरू हुआ था 2014-15 में और नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ था, वो कहीं पे मुझे लगता है कि उसकी स्टीम थोड़ी कम हो गई है और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये काम एक सरकार अकेले नहीं कर सकती, ये सरकार को इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम करना है, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इंडस्ट्री को पता है कि इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, किन किन जगहों की क्या जरूरत है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, मोड कैसा होगा, इंस्ट्रक्टर्स कैसे होंगे, इसकी सबसे अच्छी समझ जो है वो इंडस्ट्री को होती है। अभी भी जो कंट्री में सबसे अच्छी स्किलिंग स्कीम्स हैं वो इंडस्ट्री रन कर रही है, यानी उसमें थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है और वो बदलाव हो भी रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक के जो बदलाव हुए हैं। पहले वित्त मंत्री हमने देखा अपने घर से, अपने निवास से वो निकली, उसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंची और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से जो आई, उसके बाद संसद भवन पहुंची कैबिनेट मीटिंग के लिए और उसके बाद अब उनको कैबिनेट से बजट की मंजूरी भी मिल चुकी है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अहम 4 तस्वीरें, वित्त मंत्री के निवास की तस्वीरें, वित्त मंत्रालय की तस्वीरें, तमाम अपने अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री अपने हाथों में उस लैपटॉप को लिए हुए, डिजिटल वर्जन को लिए हुए बजट की और सबको दिखाते हुए, मीडिया को, प्रेस को दिखाते हुए, क्योंकि कल जब अखबारों में खबरें छपेंगी तो ये कुछ अच्छी तस्वीरें होंगी जब तमाम अखबार वाले इसको छापेंगे। और तीसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, जब वो मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्री। और चौथी तस्वीर संसद भवन की अपने तमाम वित्त राज्य मंत्री के साथ वित्त मंत्री। तो ये बहुत ही खास तस्वीरें हो जाती है। अब से कुछ ही देर के बाद 10:43 हो चुके हैं, 11 बजे का वक्त, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में आज अंतरिम बजट को पेश करने जाएंगी। लेकिन जयंत सर, मेरा सवाल आपसे ये कि जब हम स्किल की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जानते हैं कि
कृषि में खासकर एग्रीकल्चर में महिलाओं का योगदान काफी ज्यादा है। और ऐसे में एक जो योजना आई है कि ड्रोन दीदी योजना, तो ऐसे में तमाम सरकार की भी कोशिश है कि महिलाओं को भी स्किल्ड किया जाए ताकि वो नई नई चीजों को समझें और इकोनॉमी में अपना एग्रीकल्चर के जरिए वो भी अपना अहम योगदान दे सकें। देखिए, मेरा ये मानना है कि महिला भी बराबर की हिस्सेदार हैं हमारी वर्कफोर्स में, और वो किसी से कम नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में आप जितने बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं, उसकी मेरिट लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको उसमें 50% से ज्यादा लोग महिलाएं मिलेंगी। तो हमारे वर्कफोर्स का 50% क्यों नहीं महिलाएं होती हैं, और हमारा जो विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स है वो उसमें और इजाफा होने की जरूरत है। कुछ जो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री अगर आप कंट्री में देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी 35 से 40 बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 35 से 40% लोग जो हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाएं आज की तारीख में जिन जिन क्षेत्रों में हैं वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। मुझे लगता है कई मायने में उनसे आगे चल रही हैं। कई प्रोफेशंस हैं जहां पे दे डू बेटर देन मेन। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये होती हैं क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल इस तरह की है, उनको घर को भी देखना पड़ता है और उसके साथ चलना पड़ता है, और इसीलिए शुरुआत में तो महिलाएं काफी नंबर में आती हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं पे आके जब जो हायर मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं तब तक महिलाओं का नंबर कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और ये होती है। क्योंकि सरकार भी जिंदे हम देखें कि सरकार लगातार इंटरवीन कर रही है, इन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की जरूरत है, और इसको इस तरह से हर चीज को संयोजित करने की जरूरत है कि वो महिलाएं एक सामंजस्य बना के चलें, और उसमें जो कुछ चेंजेस करने पड़े अपनी एचआर पॉलिसीज में, उसको भी करने की जरूरत है। बिल्कुल, वो सामंजस्य जो है, वो समावेश जो है वो अब बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जनरल साहब, हम अगर खासतौर से देखें, क्योंकि जो भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र में भागीदारी ऐसे ही नजर नहीं आ रही है, जो परिणाम है वो ऐसे ही नजर नहीं आ रहे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकता जो है वो अब हम कह सकते हैं कि कैसे बदल रही है, जो बदलाव हो रहा है, बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जो पहले हमने इन सब एरियाज़ में इवन वुमेन एम्पावरमेंट में भी जो कदम उठाए थे जी, ये उन्हीं के नतीजे हम देख रहे हैं पॉजिटिव, और इनको कहीं ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इनकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, और ये सब चीज़ें उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हम ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये देश के लिए बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। और हमने देखा जिंदे सर कि चाहे वो मातृत्व अवकाश की जो अवधि थी उसको बढ़ाने का काम किया गया, जो एचआर पॉलिसी की बात कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए लगातार अच्छी चीज़ें लाई जा रही हैं, और खासकर अगर सेक्सुअल हरासमेंट की बात हो तो उसको लेकर भी सख्त कानून बनाए गए हैं वर्क प्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और जिस बात का जिक्र जयंत जी कर रहे हैं हम उसमें और भी आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से महिलाओं के लिए और महिला वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात जब आती है उसमें महिलाएं अपनी भागीदारी अर्थव्यवस्था में किस तरह से निभा सकती हैं, इस दिशा में लगातार सरकार भी काम कर रही है। माहेश्वरी जी, इस पर आपका कमेंट। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे चलना चाहूँ तो किसी भी बजट में डिमांड एंड रिसोर्सेज दो चीज़ बहुत अहम है। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, और क्या वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमें उन दोनों को मिला के देखना पड़ेगा कि हमारा टोटल रिसोर्सेज और डिमांड पे क्या आपस में समावेश बनता है। ठीक, अगर हम पिछले साल की कलेक्शन की बात करें, जीएसटी की जैसे महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट कलेक्शन आया है। डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की बात करें तो 20-30% का इजाफा वो देखने में मिलता है, जिससे हमारे पास रूम है, मिनोरिटी का रूम है, हम उसको चाहें तो थोड़े बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन एक एस्ट्यूट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम ये चाहते हैं कि विदाउट फाइनेंशियल एलोकेशन भी क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अगर हम सारी चीज़ों को समझना चाहें तो अगर हम एक लेमैन के तरीके से, अगर हम छोटा सा इंडेक्स की तरह हम समझें, तो जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया, मई 2014 में, उस समय हमारा जो निफ्टी था वो करीब 7500 से थोड़ा सा कम था, और उस दिन जब मेजोरिटी मिली थोड़ा सा बड़ा था, जो कि आज करीब 22,000 है, जिसमें 2.95% टाइम्स की ग्रोथ है। मतलब पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना इकोनॉमी बढ़ गई है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, वो भी उस समय 24,000 कुछ था, जो सेम डे 25 हुआ, जो कि आज 73,000 के करीब पहुंच गया है, जिसने भी ऑलमोस्ट 2.92 की ग्रोथ दी है। तो एक लेमैन की तरह से हमें समझना पड़ेगा कि एक मार्केट में कॉन्फिडेंस है, मार्केट में जो अभी बात चल रही थी कि हमें जो सेलेक्टिव पेनिट्रेशन करना है, बिकॉज डिमांड बहुत है
हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें यूथ पे भी खर्चा करना है, प्रेस पे भी खर्चा करना है, हमें वीमेंस पे भी करना है, डिफेंस फोर्स पे भी करना है, हमें डिफेंस के लिए इक्विपमेंट भी खरीदना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड भी बनाना है। बट हम सारे जगह थोड़ा थोड़ा करें तो शायद हम क्रिटिकल मास को, क्रिटिकल इनर्शिया को तोड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए जो हमने पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की आज पॉलिसी है, जैसा सब लोगों ने सपोर्ट किया कि हमें आइडेंटिफाई करना है और 3 या 4 स्तंभ को हम लेके करेंगे और उस पर डीप पेनिट्रेशन करेंगे। और इसी की बानगी हम मान सकते हैं अंतरिम बजट में जो है हमें यहाँ नजर आएगी। फिलहाल संसद से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो है वो लगातार हमारे साथ हम चलेंगे शायद के पास बाद में, लेकिन माहेश्वर जी इस बात को तो आप भी मानेंगे कि जैसे आपने मार्केट की बात की, सेंसेक्स की बात की, निफ्टी की बात की, इसका मतलब कि जो भरोसा है इन्वेस्टर्स का वो बढ़ा है, एक बात। दूसरी बात कि जितने हमारे फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो भी बीते 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, तभी तो इकोनॉमी 7% से ज्यादा के ग्रोथ रेट हम अचीव कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, यही हम चाह रहे हैं कि कल्मिनेशन ऑफ सारे इफेक्ट्स हैं। जो आज हम इन्वेस्टर की बात करते हैं, जो 2 करोड़ से आज 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए हैं। एफडीआई की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एफडीआई और एफएफआई की जो कलेक्शन है वो इंडिया में आ रही है। 2019 के बाद अब देखें तो जो डेट फंड्स था उसमें ज़्यादा कलेक्शन नहीं आ रही थी, पर पिछले 2 साल में डेट फंड्स में भी कलेक्शन आनी शुरू हो गई है। इस बार पहली बार 38,000 करोड़ रुपीस डेट फंड में भी आ चुके हैं। तो जो हमारे 4th लेवल की बात है वो हम बात कर ही रहे हैं और हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, और उसके लिए वो घड़ी भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब सिर्फ 9 मिनट रह गए हैं, 34 सेकेंड 33 सेकेंड, तो उल्टी जो गिनती है वो चालू हो गई है। ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं और उल्टी गिनती आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सिर्फ 9 मिनट का वक्त रह गया है, 9 मिनट 23 सेकेंड 22 सेकेंड मुकुल, और वो बजट पेश करने की जो घड़ी है वो बस आने ही वाली जी बिल्कुल, महज 9 मिनट रह गए। और इन 2 तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर है कैबिनेट बैठक से पहले की, जब वित्त मंत्री पहुंची थी यहाँ पे, और उसके बाद जब वो बैठक से बाहर निकली हैं संसद भवन में, और कुछ देर बाद हम देखेंगे सीधा जब वो अंतरिम बजट पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले एसके जिंदल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके के अभी तक हम बात करें कि कैसे जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ सरकार का जो फोकस है सिर्फ आर्थिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ भी विकास की बयार बह सके। जी बाकायदा। और जब मैं एक लाइन उसमें भी ऐड करना चाहता हूँ, जो महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए जितना मान सम्मान पिछले सालों में उनको बढ़ा है, जो ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए था मिल रहा है। मैटरनिटी लीव्स की आपने बात की और सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में पॉलिसीज जो थी, ये सब मुमकिन हुआ है। सरकार ने वो करेक्शंस रिफॉर्म्स किए हैं क्योंकि सरकार स्टेबल थी, उसमें ताकत थी, वो निडर थी, वो बिल्कुल नहीं डरी ओपोजिशन वगैरह से कि भी अगर हम ये करेंगे तो ये शोर मच जाएगा। तो ये सब मुमकिन इसी वजह से हुआ है, और मैं स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से, स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से। और आगे भी ये जो आज हम देख रहे हैं सबके चेहरे पे जो मुस्कान है, वो स्टेबल गवर्नमेंट उसके पीछे है, जिसकी वजह से ये मुस्कान है। और ये जो आज जैसे अभी भी आप पूरे देश में देख लीजिए चाहे विदेश में देख लीजिए, इतना उत्साह है ये स्टेबिलिटी की वजह से। और पहले जो होता था नर्वसनेस बनी रहती थी, जो पहले के बजट्स आपने देखे हों, मैंने देखे हैं, तो उनमें एक नर्वसनेस चेहरे पे बनी रहती थी, पता नहीं क्या अनाउंस हो जाए, क्या कुछ हो जाए। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं रहती थी स्थिति। लेकिन डॉक्टर महेश्वरी, आप कैसे देखते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर, खास सेक्टर जहां आज आपको उम्मीद है कि इनके बारे में कुछ निकल कर आएगा? देखिए, सोशल सिक्योरिटी में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है पेंशन रिफॉर्म्स का। पेंशन रिफॉर्म से मुझे लगता है कि काफ़ी ये पॉलिटिकल इशू भी है और लॉन्गेविटी का इशू भी है। और अल्टीमेटली जब एक आदमी ओल्ड एज में करता है, चाहे वो आज गवर्नमेंट में हो या नॉन गवर्नमेंट में हो, उसको कोई ना कोई एश्योर्ड रिटर्न्स का एक जारी होना चाहिए। एनपीएस ने इस बारे में बहुत काम किया है। नेशनल पेंशन स्कीम 2004 से जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए थी, बाद में प्राइवेट सेक्टर में और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी मिल गई। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें नेशनल पेंशन स्कीम में काफ़ी बदलाव या मॉडिफाइड या इसको थोड़ा लिबराइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसका काफ़ी अच्छा कलेक्शन बन गया है जितना इसमें पार्टिसिपेशन है। बिकॉज जब भी हम एक छोटी स्कीम को लाते हैं और उसमें क्रिटिकल मास नहीं होता तो समय कम है। जयंत जी, आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि आपसे कुछ ही देर के बाद बजट पेश होने वाला है, आप किस तरह से उम्मीदें रखते हैं इस बजट से? आपकी उम्मीदें क्या हैं? जी, मुझे लगता है ये काफी बैलेंस बजट होने वाला है और इसमें एक अच्छा सामंजस्य होगा जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, उसके बीच में,
जिसको फिस्कल प्रूडेंस के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट को भी कंटेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो मुझे लगता है इस साल के अंत तक 5.3% के आसपास होगी। और वो प्रयास अगर वैसे ही चलते रहे तो 2025-26 के एंड तक 4.5% होगी। तो ये एक मुझे लगता है कि काफी बैलेंसिंग एक्ट होगा और कुछ पॉपुलिस्ट चीजें आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म जनरली लोकसभा इलेक्शन से पहले वाले बजट में उतने नहीं आते, उसके बाद के 2-3 सालों में ज्यादा होते हैं। चलिए बिल्कुल जय जी, क्योंकि करीब 5 मिनट का जो समय है वो रह गया और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि अब पहुंच रहे हैं और ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अंतरिम बजट पेश करेंगी। एसके जिंदल जी, आप किस तरह की उम्मीद करके चल रहे हैं इस बार? मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार बिल्कुल समर्थ है, पॉपुलिस्ट मेजर्स जैसे कि जैन जी ने कहा वो रहेंगे उसमें कुछ हद तक, लेकिन उम्मीदें कम होंगी क्योंकि नहीं, इलेक्शन ईयर है, लेकिन वो लोगों को कुछ हाथ में देंगे मुस्काने के लिए, ऐसे नहीं छोड़ेंगे उनको। ठीक है। और दूसरी तरफ बाकी अपनी पॉलिसीज़ के साथ वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि मैं देखता आया हूँ अभी भी कि वो हर चीज़ को सीरियसली लेकर के उसको इस्तेमाल करते हैं। हर जो टूल होता है उनके हाथ में उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको सस्टेनेबल बनाते हैं। कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो इंश्योर करते हैं कि वो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए। ये नहीं तो कि उम्मीद करें कि ये जो आने वाला बजट है वो हम सब की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और हम सभी को कुछ ना कुछ इस बजट से हासिल होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस चलेंगे संसद भवन में वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में अंतरिम बजट 2024 पेश करने वाली है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a finish. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा।
कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and
geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process,
government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data.
The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA,
are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and
affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up.
Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. $83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies, and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services
at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri, gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts.
Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment
we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13
lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade.
As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission,
I rise to lay on the table the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वो क्या रहेंगी इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट हो रहा तैयार। देश के लोगों को है उम्मीदें अपार। किस सेक्टर को क्या मिलेगा खास? गांव, गरीब, युवा, कारोबारी, किस किस की पूरी होगी आस? अंतरिम बजट पर देश की उम्मीदों पर आधारित हमारा खास शो। ये साल अंतरिम बजट के लिहाज से, मैक्रो इकोनॉमी के लिहाज से कैसा नजर आ रहा है? एक्चुअली 2021 से हम लोग 7% के दर से ज्यादा चल रहे हैं। अगले वर्ष में मुझे लग रहा है कि हम लोग ये 7.3 से भी आगे चले जाएंगे। बजट 2024 विकसित भारत का संकल्प। देखिए हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।